Hello students, this is Sudhir Tomar. In the last video we studied past perfect, past perfect continuous and future indefinite. Today we are going to study use of future indefinite and further tenses. Let's start with use of future indefinite. Use of future indefinite. फर्स्ट यूज जो हम प्रयोग करते हैं इन द प्रिंसिपल क्लॉज we use future indefinite in the principal clause when the conditional clause is in present indefinite. Let's see the example. If you come here, I shall help you. I shall help you. अगर आप यहां आएंगे मैं आपकी मदद करूंगा. देखिए कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो प्रिंसिपल क्लोज है वह फ्यूचर इंडेफिनिट में. सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम इसी से संबंधित. when it rains the plants will grow. जब बारिश होगी the plants will grow, plants वृद्धि करेंगे, plants will grow. सेकंड देखेंगे हम. सेकंड का प्रयोग किया जाएगा विद वर्ड्स टुमारो, विद वर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट, डे, मंथ, ईयर. वी यूज विद बिफोर. वी यूज फ्यूचर indefinite. For example, I shall meet you next Sunday. I shall meet you next Sunday. He will attend a meeting on Monday. Third, events. With events of future that the events of future that happen generally, for example, generally, for example, summer will come again. Summer will come again. Birds will build their nests. This is the use of future indefinite. Let's see further. Let's see further. Means we will know about the future continuous. First of all, the
आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। इन हिंदी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आते हैं वे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह एक उपन्यास लिख रहा होगा, वे स्टेज पर नृत्य कर रहे होंगे, हम अपना अध्याय दोहरा रहे होंगे, वह भाषण दे रहा होगा। These are the examples of future continuous. Let's see, future continuous. Future continuous. In English, the helping verb tells us the identification. Helping verb will, shall plus be means the will, shall is the helping verb plus be. Let's see the example and the structure. Simple sentence. Simple sentence. Subject will or shall plus be plus first form of the verb plus ing plus object and remaining part of sentence. The remaining part of sentence. वह अखबार पढ़ रहा होगा। He will का प्रयोग करेंगे। He will be reading newspaper. He will be reading a newspaper. He will be reading newspaper. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक और देख लेते हैं एग्जांपल। The gardener will be watering the plants. माली पौधों को पानी दे रहा होगा। To make it negative, we only use not after will or shall. He will not be reading newspaper. The gardener will not be watering the plants. Watering the plants. देखिए आगे। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या शुरू में आता है? क्या वह अखबार पढ़ रहा होगा? देखिए, will, shall plus subject plus be first form of the verb plus ing plus will, shall, subject be first form of the verb plus ing plus object plus remaining part of sentence. Will, shall, subject be first form of the verb ing object plus remaining part of sentence plus sign of interrogation. Sign of interrogation देखिए, क्या वह अखबार पढ़ रहा होगा? Will he be reading newspaper? Will he be reading a newspaper? देखिए,
interrogative, negative. Interrogative, negative, we only add not after subject. Will he not be reading a newspaper? Will he not be reading a newspaper? Let's see for the interrogative. Begin with WH value word. कब, क्यों, कहां, कैसे यूज करेंगे हम? देखिए, वह अखबार क्यों पढ़ रहा होगा? WH फैमिली वर्ड प्लस will, shall plus subject plus be plus first form of the verb plus ing plus object remaining part of sentence plus sign of interrogation. Why will he be reading a newspaper? एक न्यूज़पेपर मीन्स एक अखबार कौन पढ़ रहा होगा? Who will be reading a newspaper? These are the structures of future continuous. Let's see further. Now we will discuss future perfect tense. First of all, its identification in Hindi as well as in English. In Hindi, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आ होगा, ए होगे, ई होंगी आदि आते हैं, वे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसने एक नई जॉब ढूंढ ली होगी या वह एक नई जॉब ढूंढ चुका होगा. वे खाना खा चुके होंगे, हम मैच जीत चुके होंगे. वह अपना अध्याय दोहरा चुका होगा. उसने प्रधानाचार्य को अपनी शिकायत सौंप दी होगी. टीचर, अध्यापक नेक्स्ट वीक तक, अगले सप्ताह तक अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर चुका होगा. These are the examples of future perfect tense. Future perfect. Let's see helping verb. As we know, in future tense, will and shall are the helping verbs. In future perfect, will, shall plus have. Will, shall plus have. Helping verb will, shall plus have. Let's see the structure. Simple sentence. Subject plus will or shall. Will or shall plus have. Plus third form of the verb plus object. Remaining part of sentence. This is the structure of simple sentence in future perfect. Let's take some example.
वह अपनी शिकायत प्रधानाचार्य को कल तक सौंप चुका होगा। He will have handed over his complaint to the principal by tomorrow. अध्यापक अगले सप्ताह तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। The teacher will have completed his syllabus by next week. The teacher will have completed his syllabus by next week. In negative sentence, to make it negative, we have to add not after helping verb will or shall. And the teacher or he will not have handed over his complaint to the principal by tomorrow. The teacher will not have completed his syllabus by next week. Simple and negative. Let's see further. Interrogative. Will or shall plus subject plus have plus third form of the verb plus object, remaining part of sentence plus sign of interrogation. क्या वह अपनी शिकायत प्रधानाचार्य को कल तक सौंप चुका होगा? Will he have handed over his complaint to the principal by tomorrow? नेक्स्ट देखें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव. To make it interrogative negative, we add not after subject. Will he not have handed over his complaint to the principal by tomorrow? Interrogative negative. Interrogative sentences with WH family word. The WH family word plus will or shall
WH family word plus will shall plus subject plus have plus third form of the word plus object, remaining part of sentence plus sign of interrogation. Let's see the example. देखिए, अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को अगले सप्ताह तक कैसे पूर्ण कर चुका होगा। कैसे? हाउ विल द टीचर हैव कंप्लीटेड हिज syllabus? How will the teacher have completed his syllabus by next week? अगले सप्ताह तक कौन अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुका होगा? हु से बनाइए, हु will have completed his syllabus by next week. These are the structures of different sentences. Now we will study use of future perfect. Use of future perfect. Use of future perfect. First, to express likelihood means the possibility. Possibility. जैसे you will have read the Gita. आपने गीता को पढ़ा होगा। सेकंड देखते हैं, you will have heard about. You will have heard about the freedom fighters. To express likelihood means possibility. देखिए second, to describe actions or events that will have been completed at the certain time in future. उन एक्शंस और इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे जो फ्यूचर में किसी सर्टेन पॉइंट पर समाप्त कर दिए जाएंगे, पूर्ण कर लिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट will have recovered from his illness by next week. सेकंड देखिए एक और एग्जाम्पल,
submitted your report by Monday. Let's see further. थर्ड देखिए, when two actions will be completed in the future, earlier work or action, earlier action in future perfect and the later action in present indefinite. For example देखिए एक बार, पौधे बारिश के आने से पहले सूख चुके होंगे। अब पौधों का सूखना और बारिश का आना, पहले पौधे सूख चुके होंगे। The plants will have dried before the rain comes or before it rains. Plants will have dried, future perfect and present indefinite. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, they will have played the match before the sun sets. सूर्यास्त होने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। These are the use of future perfect. Let's see further. Now we will study future perfect continuous. First of all, in its identification in Hindi as well as in English. In Hindi, जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि आते हैं, वे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। जैसे वह 10 मिनट से अपना अध्याय दोहरा रहा होगा, वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे 10 साल से अपने गांव में रह रहे होंगे। These are the examples of future perfect continuous. Let's see future perfect continuous. Future perfect continuous. Helping verb will, shall plus have plus been means the helping verb जो होती हैं वो will shall ही मानी जाती हैं पूरे फ्यूचर टेंस में। will, shall plus have been means the helping verb जो होती हैं वो will shall ही होती हैं। देखिए स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का,
सिंपल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए एक बार। सब्जेक्ट प्लस विल shall plus have plus been plus ing plus object, remaining part of sentence plus since or for plus time। since और for का यूज कैसे करना है हम सीख चुके हैं पहले ही। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं एक। वह अपना अध्याय 2 बजे से दोहरा रही होगी। She will have been revising her chapter since 2 o'clock। since 2 o'clock। वे अपने गांव में 10 साल से रह रहे होंगे। They will have been living in their village for 10 years। Simple sentence। To make it negative, we add not after will or shall। She will not, हम यहां नोट लगाएंगे नेगेटिव करने के लिए। She will not have been revising her chapter since 2 o'clock। They will not, नेगेटिव करने के लिए they will not have been living in their village for 10 years। The simple and negative। Let's see further। Third, interrogative। स्ट्रक्चर क्या होगा? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस प्लस सिंस और फॉर, प्लस सिंस और फॉर के बाद प्लस टाइम, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वे 10 सालों से अपने गांव में रह रहे होंगे? Will they have been living in their village for 10 years? Let's see interrogative, negative। Interrogative negative बनाने के लिए we only add not after subject। Will they not have been living in their village for 10 years? देखिए इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लेट्स सी फॉर द
देखिए इंटरोगेटिव WH फैमिली वर्ड WH family word plus will or shall plus subject plus have plus been plus first form of the verb plus ing plus object, remaining part of sentence plus since or for plus time plus sign of interrogation. ये हमें प्रयोग करना है यहां पर। जैसे वे अपने गांव में 10 साल से क्यों रह रहे होंगे? Why will they have been living in their village for 10 years? देखिए, these are the 5 structures in future perfect continuous. Students, today we have studied use of future indefinite, future continuous, its use, future perfect, its use, and future perfect continuous. In the next video we will take our next topic. Till then, thank you and have a nice time.